all together. Today we're learning about Virat Kohli on Breakfast with Champions. Here we go. Wow. Start the show with a bang. देखिए, पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा। I'm gonna make these subtitles huge. Huge. Yeah, why are they so small? That's what she said. कि आज यहाँ पे कौन आया है? कौन आया? The post-match gentleman या दिल्ली का छोकरा? तुम तो हमें जानते हो सिस्टर। दिल्ली का छोकरा। जेंटलमैन तो जब हमने होना होता है, मैं हो जाते हैं। हाँ, वो स्विच ऑन करना पड़ता है। हाँ, ये डिफॉल्ट सेटिंग है। ये डिफॉल्ट सेटिंग है। जैसे ही अपना माहौल मिल जाता है उसके बाद। Well, who does Anushka Sharma get? फिर मैं आया इसलिए हूँ। मैं आया तुम्हारा What's पिछला that? एपिसोड देख के हूँ। मुझे What's इंस्पिरेशन I don't पिछले know. एपिसोड से मिली। नैरा जी जब से। तक मैंने नैरा जी का एपिसोड नहीं देखा था, मेरा मन नहीं था। Oh, ऐसा wow. लोगों को पता भी नहीं है कि he doesn't try to be funny, but he is. This is That's what we love about. दांत देनी पड़ेगी उनकी 12 ऑपरेशन करा के भी मतलब क्या देनी पड़ेगी? दांत देनी पड़ेगी। दांत What देनी- happened? यार, Make subtitles bigger. Make subtitles great again. Breakfast with Champions. मेरे को सबसे पता है इस मजा क्या आता है इस शो में। कई लोग आते हैं जिससे हिंदी में बात होती है, कई ऑस्ट्रेलियन वगैरह आते हैं उनसे टिच इंग्लिश में बात होती है। मेरे अंदर के ना सारे बंदे एंटरटेन हो जाते हैं। लाइवली रखना चाहिए। जे तू लगदी पंजाबन लगदी पटोला। पटोला लगे नहीं तो सारे यहाँ तो वखनी तेने सूट कर। मेरे को हिंट दो। Excuse me, what is a patola? What is a patola? Punjabi good-looking woman. Oh, he does a good English Yes, wearing a accent. suit. Okay. We would urge young people not to use that word in public. Yes. Unless you're talking to Punjabi people. A patola. Did you catch that? Patola? Did you? No, the camera person freaking out. Why? Because he was out of focus, she was in focus, and the camera's like. Oh, okay. I don't know if it was I didn't notice. I don't know if it's a camera person or just the camera doing autofocus. Good looking, what is a patola? Yes, wearing a suit. Okay. Watch, it's gonna We would throb right urge here. young people not to use that word in public. Yes. Unless you're talking to See? Punjabi people. A patola. No big और एक और deal. hint दूँ? हाँ जी। तू तक तूतिया। हाय जमालो। मैं जो छोटा He था knows मुझे his लगता था music. दही जमा लो है। सबको ही लगता था। हमको सबको यही सिखाया हुआ था। अच्छा एक और बताओ। हाँ। हो। इश्क तेरा तड़पा। Oh, he knows Oh, his stuff. wow. He knows his stuff. He could be a DJ. ईशान शर्मा ने भी बाल बढ़ाया ना, वो पीछे बाल बांध के आया। उसने एक बार काला चश्मा पहना, तो उसने सुखबीर नाम रख दिया उसका। लंबा भी है। Who are the other Punjabis in the team now? Because काफी जो बाकियों को समझ नहीं आती होगी ना ये बातें। पंजाबी Oh, he's म्यूजिक a चलता है Punjabi सिर्फ boy? चेंज रूम में, क्योंकि आईपॉड ज्यादा लोग लाते नहीं। हार्दिक पांड्या के पास आईपॉड है, उसमें सारे इंग्लिश गाने हैं। उसको एक भी गाने के 5 वर्ड भी नहीं आते। उसको बस बीट चाहिए और वो बस When he says iPod, he means an actual iPod? I don't know, maybe. मेरे आईपॉड में पंजाबी गाने, कभी कभी हिंदी रोमांटिक सॉन्ग्स भी होते हैं, लेकिन बाकी पंजाबी। Gets you like in the mood to play cricket. पंजाबी होने चाहिए टीम में ना, एक दो। शिखर है, मैं हूँ, तो हमारे लॉजिस्टिक्स मैनेजर है ऋषिकेश उपाध्याय, गुजराती बट बॉर्न इन जलंधर। अजीब सा मिक्स है लेकिन वेरी एंटरटेनिंग पंजाबी होगा। So बाकी कौन है एंटरटेन करने वाले? एंटरटेन करने वाले बहुत लोग हैं। हार्दिक पांड्या तो पहले ही मेंशन हो चुके हैं। Let's उस start. जैसा मतलब खोया हुआ आदमी मैंने लाइफ में नहीं देखा। वो मतलब वो कुछ भी बोल देता है। अभी उसने ऐश का नाम ले रहा था, वो अश्विन का, कुछ दिन पहले, तो वो जल्दी में कहता है अरे वो रवि कश्यप अश्विन क्या बॉलिंग करता है यार। रवि कश्यप। कोई उसका कुछ कंट्रोल नहीं है ज़बान पे, मतलब दिल का बहुत साफ है, लेकिन कुछ भी बोल देता है। He needs to self-edit. एक्चुअली वन ऑफ द फनीएस्ट पीपल यू Yeah. एवर कम अक्रॉस। यू हैव स्पोकन। Yeah. उसका क्या है बेस्ट, उसको कोई इशू एड्रेस करना है ना, वो प्रॉपर अपना टपोरी भाषा में बोलेगा। Yeah. जैसे अब मैंने बोलना है कि यार लोखंडवाला में बहुत ट्रैफिक है, वो पता कैसे बोलेगा आगे, अरे वहाँ है ना बहुत ये है। अच्छा 5 सेकंड हो गए, 10 सेकंड हो गए, अरे बट बहुत ये है यार, मतलब तुम समझो कि कहाँ है और क्या है। I didn't मैंने realize तो there बोल was a दिया। whole like अब Mumbai तुम्हारे ऊपर है, slang. तुम्हारा दिमाग कितना तेज है। मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ। It sounds अच्छा इनिशियली confusing. ना जब रोहित he was bursting onto the scene, तो हमें बड़ी ना क्यूरियोसिटी होती थी। रोहित शर्मा का नाम बहुत, मतलब एवरीवन सेड यार ये एक प्लेयर आ रहा है, ये एक प्लेयर आ रहा है, तो बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि यार यंग प्लेयर तो हम भी हैं, ऐसा कौन सा प्लेयर आ रहा है यार, हमारी कोई बात ही नहीं कर रहा। तो T20 वर्ल्ड कप था, तो उसको बैटिंग करते देखा ना मैंने, तो मैं ऐसे ही बैठ गया सोफे पे। Because he's that good. मैंने कहा बेटे आज के बाद कुछ मत बोलना, बिकॉज व्हेन यू सॉ हिम प्ले
you understood what people were talking Although about. I feel like when we watched what we are that witnessing here. show, So, amazing. I haven't seen he was not having a good someone time the time. ball better than me. रोहित के पास 1 सेकंड एक्स्ट्रा है सबसे. एक नहीं सर 1.5. In real life, he looks such a space cadet. बस जितनी चीज़ें रोहित शर्मा भूलता है उतना मैंने किसी को नहीं देखा चीज़ें भूलते हुए. आईपैड, वॉलेट, फोन, मतलब छोटे मोटे काम नहीं, सीधा जो चीज़ें जो डेली यूज की हैं Dang. सीधा. But if you're rich enough to just like नया ले लेंगे. buy new ones, उसको पता ही नहीं रहता it छूट doesn't गया. matter. बस आधे रास्ते needs हो an जाते हैं होटल में, AirTag. उसको याद है मेरा आईपैड प्लेन में था. पासपोर्ट तो नहीं हुआ ना कभी उसका बेचारे का. पासपोर्ट भी उसने छोड़ा है 2-3 बार. Damn. Okay, quick. In the comments, what have you forgotten on a plane? I will go first. I lost my AirPods on a plane. I immediately had to go and buy new ones. It sucked because those were like $150. And like we got to the car at the taxi and I was just like, it's gone. Even though the airplane's a long walk back, I'm not doing it. I can't remember. I've never. HR never forgets anything. No, that's false. Just her soul. That's right. लॉजिस्टिकल मैनेजर मैसेज डालना शुरू कर दिया कि रोहित से पहले मुझे सामान है. तो जब उसकी यस मिलती है तब बस हिलती है. उसके अलावा नहीं. बैट है, पासपोर्ट है. क्रिकेट का सामान नहीं. चल अब क्रिकेट का सामान. बैट और पासपोर्ट है, अब निकल. बस. और कुछ नहीं चाहिए. जडेजा का तो आपको पता ही है. शिखर धवन. तो एक बार दिल्ली का मैच था हमारा रणजी ट्रॉफी का और विकेट कीपर हमारे पुनीत बिष्ट. तो फर्स्ट स्लिप में शिखर धवन, सेकंड स्लिप में मैं. तो ओवर हो रहे हैं एक के बाद एक. रोशनरा क्लब में मैच था. तो वी आर स्विचिंग एंड्स. तो एक नया टीम में प्लेयर आया. तो अब वो ना आए और बार बार मेरे से बोले यार क्या बैट है यार, ये कहाँ से लिया. मैं इरिटेट हो जाता हूँ. तो मैं परेशान हो गया. मैंने कहा यार ये लड़का मतलब जब देखो दिन में जब पीछे मुड़ जाओ तो वो खड़ा होता है. मेरा तो ऐसा हाल हो गया. तो वो पुनीत जब अपना विकेट कीपर था वो बोला कि हाँ मतलब यार वो लड़का अनोइंग हो सकता है लेकिन ठीक लड़का है. तो इधर भाई साहब शिखर धवन जी उन्होंने अपना दिमाग चलाया जादुई. तो कहता है हाँ यार वो लड़का तो ठीक है लेकिन वो ना नोटबुक्स में आने की कोशिश करता है. Notebooks? तो मैंने कहा नोटबुक्स क्या होता है. Yeah. कह रहा वो कौन सी बुक्स बोलते हैं. गुड बुक्स को कहते हैं. Oh, is your notebooks? That's cute. मैंने कहा तेरे स्कूल में तो कभी छुई नहीं. Oh. और स्लिप खड़ी है, कीपर खड़ा है, दोनों हंस रहे और मैं जमीन पे. आदमी गुड बुक्स को नोटबुक्स कैसे बोल सकता है. और सीरियसली मतलब ये ऐसे लेवल पे ऑपरेट करते हैं लोग. बहुत मजा आता है. बट शिखर इज आल्सो सुपर एंटरटेनिंग. उसको भी लगता है कोई फिक्र नहीं है दुनिया की. चांस ही नहीं है. एक बार उसको याद है न्यू ईयर पार्टी थी दिल्ली में. हमारा एक दोस्त था उसके फार्म हाउस पे करते थे हम लोग पार्टी. तो बड़ा एक्साइटेड कह रहा न्यू ईयर पार्टी होगी. That sucks when you're trying to participate and you just mess it up completely. Yeah. Like you're just trying to like, yeah, colloquial, slang. For all intents and purposes. All intents and purposes. For all intensive purposes. No. For all intensive purposes. That's the wrong. That's the wrong- ironic. Yeah. For all intensive purposes. No, I feel like right now it's interesting. We're getting all of this kind of behind the scenes stuff, but it almost feels like Virat Kohli is just here spilling the tea on all of his teammates. I want to hear about him. That just feels like a very Indian thing, though. That's something that we don't have here. And it seems like in India, you can just like... You can just like spill all the tea. Spill all the tea. Yeah. Throw everyone under the bus. कहता हाँ चलो प्लान बनाओ. प्लान बन गया, सब ऑर्गेनाइज हो गया. तो भाई साहब कहीं गाड़ी में जा रहे थे घर. तो फ़ोन आ गया किसी का. उस बंदे ने बोला हाँ जी शिखर धवन जी. कहता हाँ. तो ये ट्रैफिक में चला रहा है और बात कर रहा है और बहुत ट्रैफिक होगा और निकलने की कोशिश कर रहा है. तो उसने बोला कि अच्छा ये मुंबई में ना फंक्शन है तो आपको आना है, तो हमें चीफ गेस्ट बनाना है तो कराने. कह रहा हाँ ठीक है मेरे को बाद में फ़ोन करो. इसने बाद में फ़ोन करो करके रखा और भाई साहब ने कार्ड छपवा दी बॉम्बे में. Oh my God. तो उसके पास टिकट आ गई ईमेल पे. Oh my shit. God. उसका फ़ोन आया. कह रहा हाँ जी वो कल का सब प्रोग्राम फिट हो गया. Like, कितने what बजे program? फ्लाइट है. कह रहा तू कौन है. कहता मेरी दोपहर में तो आपसे बात हुई है, आपने बोला हाँ ठीक है मेरे को बाद में फ़ोन करना, हमने कार्ड छपवा दिए. कह रहा भाई साहब हो कौन आप. Oh shit. आपकी फ्लाइट है 12 बजे की कल, यहाँ बॉम्बे में फंक्शन है, आप हमारे चीफ गेस्ट हो. हम लोग वो फार्म हाउस में पार्टी कर रहे हैं. तो उसको पता ही नहीं कौन है. हम फार्म हाउस में पार्टी कर रहे हैं, भाई साहब स्टेज पे बैठे हैं बॉम्बे में. Oh shoot. Oh no. क्या था यार मुझे याद ही नहीं रहा. उसने कार्ड छपा दिया, मैं क्या करूँ. Yeah, dang. He got the cards printed. That's so embarrassing. That's a quick turnaround. Yeah. Like, that's a really fast turnaround. That's super Cards fast. printed and everything.
तो यूं ही That's देखा है crazy. कि It the is best way to India. get Virat to pay a bill is by calling him a कंजूस. कि उसको एक बारी कंजूस बोलोगे तो वो Wow. अब मैं क्या बोलूँ यार. He got thrown under the bus. That's उनका सीधा fair. सीधा हिसाब है. जो आशु भाई ने बोला ना सही बात है. हाँ. चोरी किसने की? मैंने नहीं करी सर. वो बिल्कुल सही बात है कि कोई मेरा माहौल बनाए उससे पहले ही माहौल बना दो. हाँ. तो कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकता. जिसने पहले बोल दिया उसका हक हो गया. उनका पता है क्या हिसाब किताब था? शुरू में ना मेरे को फ़ोन करते थे, चीकू रोटियां मंगा. अच्छा जी, मैं क्या खाना है? मंगा ले कुछ भी मंगा ले. Oh God. कभी बताना नहीं कि क्या That's खाना like your mom today. मैंने मंगवा दिया. पनीर, कॉर्न पालक, दाल, ये वो. खाना आएगा ना, पहली बाइट दाल की खाई. ये दाल है? ठीक ही. ये पालक है. मतलब ऑर्डर नहीं देना, दूसरे से ऑर्डर करो और फिर उसकी बुराई करो बैठ के. That's annoying. क्रिटिसाइज करो कि ये क्या खाना मंगाया. यूजलेस. अगली बार बोलोगे ना क्या खाना है, तू ही मंगा ले. Here's the trick. This is what you do. This is what I've learned, okay? Okay. I pulled it on my mom today. It's usually with women, I'll say that, okay? So it works on women of all ages, is what you're saying. Yeah, but I never tried it on a guy because guys usually know what they want. That's but true. If I ask a girl, what do you want? I don't know, whatever you want. I'm like, Oh, okay. yeah, it's chill. I could eat whatever. So, so then you have to know the person and think of a food that you know they would definitely not want, right? Like if it's a chara, she goes, oh, whatever's fine. I go, okay, so we're gonna get lamb. She's like, I don't want lamb. Okay, so what do you want then? Because like if you I don't know, maybe some sushi? yeah, if you kick something at them that you know they won't like, they'll be like, oh shit, I gotta survive. Yeah. And then they'll hone in on something that they want. So what did you do with your mom then? I know my mom has never had Jamaican food. I'm sure she would love it if she had it. But because I know my mom stays within her lane, she doesn't experiment very much. I'm like, okay, let's get Jamaican food. She's like, no. I'm like, okay, what do you want then? Yeah. She goes, okay, Thai food or Korean food? I go, okay. कभी आज तक नहीं बोला क्योंकि क्रिटिसाइज करना है बैठ के. जब तक वो मसाला ना मिले ना अंदर तक, तब तक मजा नहीं आता उनको. Dang. Well, at least then you know what you're dealing with. Yeah. विराट को लगता है कि वो बड़ा डिसेप्टिव बॉलर है. वो दिन गए. अब नहीं. नहीं यार, मेरे से बॉलिंग मतलब मैं कर देता हूँ बॉलिंग. पहले मुझे एक्चुअली लगता था कि मैं लोगों को डिसीव कर सकता हूँ. How? ऐसा हुआ भी है 2-3 बार कि मतलब उनको समझ ही नहीं आता था बॉल आ कहाँ से रही है. क्योंकि मैं 2-3 बार फिसल भी चुका हूँ बॉलिंग करते हुए. Oh. एक बार तो मैंने फिसलते हुए बॉल डाल दी थी. तो मार्क बाउचर कीपर था, IPL का मैच था, किंग्स 11 पंजाब से, और बोपारा बैटिंग कर रहा था. अच्छा, कभी कभी क्या होता है जब आप गिरते हो ना तो बॉल छूटती नहीं है. उस दिन क्या हुआ, मैं गिरा, नो बॉल भी नहीं थी और बॉल हाथ से छूट गई और स्टंप के इतने ऊपर से गई. तो बोपारा यूं खेल रहा है और बाउचर यूं पकड़ रहा है. कहते ये कर क्या रहा है ये आदमी, नीचे लेटा हुआ और बॉल फेंक दी. Oh, wow. और स्विंग भी हो गई. रजनीकांत. ऐसा तो जैक पावे ने भी किया. मेरा एक्शन ही भगवान ने इतना गंदा बनाया, मतलब मेरे को क्या है वो एक्शन? पता नहीं है यार. मेरी रिदम ही उस एक्शन से बनती है. मैं और किसी तरीके से बॉलिंग ही नहीं कर सकता हूँ. मैं स्पिन भी डालता तब भी ऐसे ही हो जाता है. This dude is either just an excellent host or he's a huge fan. Yeah, no, Or both. he's doing such a good job as a podcast host of just like really relating to the other person, making them feel comfortable, looking like he's so interested. I'm sure he's a huge fan. I'm sure as he's a well. huge fan, Yeah. but like yeah. What's for breakfast? I mean, Virat Kohli looks like he's having a fantastic time. What is this? आज पहली बार ब्रेकफास्ट में चैंपियंस में सूप पिया जा रहा है. ब्रेकफास्ट कहाँ हो रहा है? 8:30 बजे रात के. सुबह के? सुबह के? चीटिंग कर रहे हैं हम. चीटिंग इंडोर में तो कुछ भी बता दो. He just like put him on blast. जो लोग शाम को 7:30 उठते हैं उनके लिए ब्रेकफास्ट है. कुछ होंगे जरूर. वो तब से तड़प रहे होंगे, भाई हमारे ब्रेकफास्ट के लिए भी कुछ करो. लो जी, आपका नाश्ता आ जाए. What do you usually eat for breakfast every day? ब्रेकफास्ट सर हमारा सेट है. हाँ जी. ऑमलेट खाता हूँ मैं. Yeah, I wonder if he's got like a egg whites, 1 whole egg, strict nutrition spinach, black plan. pepper cheese, some grilled I like bacon, his style. or smoked salmon. Oh, along lots with of protein. Yeah, papaya that's खाता great. हूँ. Dragon fruit if available, watermelon. Eat Basically decent has an amount of Indian cheese for buffet. good fats. Yeah. I mean, And well, then, the buffet I after saw that at the I carry hotels. my own nut butters, and then I use gluten-free bread in the hotel. Yeah. उसमें लगा के खाता हूँ. Oh, wow. And then a nice big pot of green tea with lemon. उसके 3-4 कप Oh, he's होते हैं. caffeinated Nice. hard. Lunch, dinner is all grilled chicken, grilled fish. Yeah. When I'm like But he's an athlete. our trainer Mr. Basu tells me to put on a bit of muscle, then I increase red meat. नहीं तो generally दोपहर में grilled chicken, mashed potatoes, spinach, veggies, and रात में I'm feeling seafood. You told me inspired. 4 years ago on your birthday, said you lifted your shirt. मैं देखा नीचे ग्लूकोज के बिस्किट What? लगे हुए थे और you said this
सिस्टर आपको पता है मैंने 1 साल से बटर चिकन और नान नहीं खाया। उसको 4 कर दो। अब 4 हो गए ना। Wow. दर्द था दिल्ली वाले लड़के का। अब गर्व है। अब गर्व है। बट इफ यू हैड वन चीट डे कि आज बॉस जो भी खाऊंगा वो ब्रोकली जैसा बन के अंदर उतरेगा, तो क्या होगा? आइसक्रीम एंड चीज केक। राम के छोले भटूरे 110%। वो भी उसकी दुकान के पास जाके। घर आते आते तो वो भटूरे कहाँ रहते हैं, वो तो भटूरे हो जाते हैं। हाँ, फटूरे हो जाते हैं। वो सिली हुई ब्रेड की फील आती है उसमें। ताजे ताजे जो फूले हुए आते हैं, इसमें उंगली मार के भटूरा नीचे दो, वैसे। थोड़े प्याज, हरी चटनी और गाजर का अचार और मिर्च का अचार। Why can't he have that? I don't know. He चलो seems वापस like he's on a फिर strict, बिल्कुल रियलिटी की like, तरफ। clean diet, I दिमाग चमकाओ। guess. So it means just the one thing. Your cheat would just be that one. You don't have a dream wish list of इतना बड़ा मेन्यू होगा। नहीं, समोसे भी होंगे। मेरा चीट जब एक मील हो गई तो फिर मेरे डिजायर खत्म हो जाते यार, हैं। ये उसके बाद वापस डिफॉल्ट आ जाता I है। need to be that ये good. कैसे हो जाता है? Every day is a cheat meal for me. I am very possessive about what I eat Yeah. and how I train. You're training like what? You're in the gym for like. How long? 6 जब फोन hours? किया था एक बारी बैंगलोर में, कहा अच्छा मैं जिम में हूँ, मैंने कहा अच्छा बाद में मिलता हूँ, मैं 4 घंटे में खत्म Oh, करूँगा। wow. मैंने कहा कि बंदा सो रहा है वहाँ पे, क्या कमरा नहीं दिया इसको क्या? 4 घंटे यूजुअली जब 2 सेशन करते हो जिम में Yeah. तो कंबाइंड 4 घंटे हो जाते हैं ट्रेनिंग के, विच इज़ ऑफ सीजन। या सीजन में 1.5 अच्छा मेटाबॉलिज्म पे भी डिपेंड करता है। अगर मेरा Yeah. मेटाबॉलिज्म हार्दिक पांड्या या शिखर धवन का भी बहुत अच्छा है, Yeah. केएल राहुल जैसा होता है, जैसे लीन फिजिक है इनकी। हम तो सर खाते पीते घर के हैं, छूटते अभी एक बार खुली छूट दो, कितनी ट्रेनिंग कर लो, 4 He'll साल put on ट्रेनिंग करिए, weight 4 दिन में too मोटा हो easily. सकता हूँ। ऐसे आएगा ना, चीक्स यहाँ तक आएगा सीधा। 4 दिन में दिख जाता है मेरे को। Is he doing muscle training the entire time he's in there? Or is he doing aerobic as well? No, we must be because, like, I would imagine that as a cricket player, you do have to keep your cardio up because there's a fair amount Okay, of running gotcha. going on. Yeah. Because Yeah. the thing is, I heard, well, at least with regards to muscle exercise, after about an hour, you actually have diminishing returns. Right. Like your muscles cannot actually fatigue in the way that you need them to after an hour, or something like that. I forget what exactly it is. This is hearsay, gym bro advice. So for anyone who's more of a gym head than me, please, or a doctor. Considerably more like this. मेरी जॉलाइन थी नहीं। ढूंढते रह जाओ कहाँ है? मैं हाथ मार के ढूंढता था, फिर भी नहीं आती थी आप। He's got something going पहले तो on. हमने मीठा तो ऐसा इतना खाया कि मीठा ही नहीं रहा, खत्म हो गया। तो मैं सूंघ के ना, मेरे को बड़ा डिजर्ट सूंघ के मुझे लगता है यार क्या बना होगा, मतलब मैं I लुत्फ wish उठाता I हूँ। could be like that. तो Like, मेरे I को अच्छा लगता है can't. ना, तो मैं दूसरों को फिर सेल्समैन बन जाता हूँ। ओए होए क्या केक है, ओए होए क्या मिठाई है, खाओ। बेचने He की lives आदत। vicariously through everyone else. और कुछ नहीं, एक्वागार्ड बेचता मैं बहुत तगड़े। ये देखिए कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया हलवा। मेरा और फिर खा के सब गाली देते हैं बाद में, अगले सुबह जब 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट ज़्यादा ट्रेडमिल पे लगाने होते हैं तो नहीं, जो कर सकते हैं वही खाते हैं। वही करते हैं। हाँ, वही खाते हैं, और जिनकी बॉडी अलाउ करती है वही खाते हैं। बाकी Dang तो it. अभी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो गया। या Oh, ब्रिलियंट I डिसिप्लिन। need to train with बहुत him. अच्छी 30 साल पहले तो लोग वेट लेके उस टाइम सर डिमांड्स नहीं थी ना गेम की वैसे। अलग थी उस वक्त। अगर आपको 3 फॉर्मेट खेलना Yeah, है, wasn't Babe Ruth fat? अगर आप फिट नहीं हो आप खेल ही नहीं सकते। या Yeah, it's ट्रेनिंग different नहीं है now. तो चांस ही नहीं है, आपकी रिकवरी हो ही नहीं सकती है, एंड मेजर इंजरी विल बी वेरी क्लोज। अभी गेम इतनी प्रोफेशनल हो गई है, इतनी जोर से आगे बढ़ रही है। Yeah. अगर आप ट्रेनिंग नहीं करोगे, yeah, the game has changed. I think Babe Ruth Yeah. was a heavier player, but the thing is, he always hit home runs. So Exactly. he could take his So he sweet could just time. walk. He could literally walk the diamond. What? He would strike every single time. तो आप इतनी पीछे रह जाओगे। inches. It's about little, such the margins have become so little. इट्स अबाउट कि आप एक कैच के लिए गए, कैच छूट गई, लोगों ने बोला ओ ग्रेट एफर्ट, बट आपका कैच तक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक्सेलरेशन कितने सेकंड में हुआ, Right. उसके लिए आपने कितनी ट्रेनिंग करी है, कैसे न्यूट्रिशन है, आप अच्छे से सोए हो कि नहीं। Yeah, they're playing वो on चीज़ें determine such an करती हैं कि elite आपका वो level. डिस्टेंस 3 सेकंड में कवर हो रहा है या 2 सेकंड में कवर हो रहा है। अगर आप 2 सेकंड में कवर करोगे तो इजी कैच है, Yeah. आप 3 सेकंड में कर रहे हो तो कह रहे हो ग्रेट एफर्ट। Yeah. तो इट्स अबाउट मार्जिन्स, इट्स अबाउट अ सेकंड हियर एंड देयर। आर यू ट्रेनिंग फॉर दैट एक्स्ट्रा सेकंड और नॉट, दैट्स व्हाट मैटर्स। That's intense. MS धोनी ने बोला था 4-5 साल पहले कि मैं बेस्ट फील्डिंग टीम बनाऊंगा इंडिया को। You remember this? He said it quite a few times as well in public. And you guys, चैंपियंस ट्रॉफी Champions in Trophy. 2013, 2013, so 4 years. where we actually fielded better than anyone else in the world. Yeah. So that was a revelation for us उस टाइम पे। खुद ही सबने सोचा कि ये क्या कर गए? नहीं मतलब एक तो यंग टीम थी, ओहो, उसके बाद कोई मतलब वो नहीं था ना,
हम तो यार ऐसे ही चैंपियंस ट्रॉफी गए थे कि बहुत यंग साइड है, विल जस्ट गो टू एंजॉय आवरसेल्फ. और व्हेन अ टीम इज लुकिंग टू एंजॉय देमसेल्व्स द मोस्ट, द ओनली थिंग दैट हेल्प्स और दैट अलाउज द टीम टू do something together is on the field. So we are enjoying each other's company. Or the fields, the grounds are brilliant in England. So the crowd support was amazing. So that whole atmosphere counts. Yeah. So we are throwing ourselves around, and you know, we actually fielded our way to the finals in the Champions Trophy, and we ended up winning it. Very special. Wow, very, very that's special. amazing. Who have you enjoyed batting with the most? I know there'll be a few, no? For reasons. Yeah, in Test cricket, I think I have enjoyed batting the most with Jinx, Ajinkya. We've had quite a few good partnerships. I think I've had few of my best partnerships with Chris Gayle and AB. Yeah. In the IPL. बहुत मजा आता है दोनों के साथ खेलने में. क्या सुपरस्टार दोनों यार, मतलब कमाल के बंदे हैं. मतलब हम तीनों की अंडरस्टैंडिंग ऐसी है, मजा आता है उन लोगों के साथ ना फील्ड पे. ऑफ द फील्ड एज वेल दे आर ब्रिलियंट ह्यूमन. क्रिस गेल के साथ क्या है एक्शन? क्रिस गेल के साथ वो ऐसे करके You gotta have like a cool handshake. भज्जूपा को देखा था एक बार करते हुए, तो मैंने कहा भज्जूपा क्या कह रहा है मुझे भी नहीं पता. मैंने कहा ठीक है. Looks cool though. तो in one-day cricket, Rohit, me and Shikhar have had quite a few partnerships. Me and MS. MS and me actually have a great understanding. We don't even like if we're running between the wickets, and if he says 2, I just close my eyes and run because I know that his judgment is so correct. I'll make it. For you to become captain and to have somebody like MS Dhoni still there, at least in one-day cricket, right? First question I want to ask you, because I've noticed this about him. In the last few years, he enjoys being in the game more than even playing the game. Yeah. What's that Amazing. mean? I don't think I've come across a better cricketing brain. Yeah. Just in terms of planning and knowing what's happening in the game and what can be done. Oh. Strategize. Sometimes I like to follow Right. my own instinct as well. But whenever I ask him anything, 8 out of 10 times or 9 out of 10 times, he always tells you things that work. Maybe he should be like a So it's a blessing to have him. Co-captain? coach or like, oh yeah, captain, coach, manager, something. Immensely. लोग बहुत बीच में कोशिश करते हैं कि कोई बीच में स्टोरी चलाओ, कोई फूड डालने की कोशिश करो. हमें फर्क ही नहीं पड़ता. Because he's not playing cricket anymore, is he, MS Dhoni? He's retired. निकलते हैं साथ में कहते हैं अरे कुछ नहीं था. I might be wrong. हमें तो पता ही नहीं क्या हो रहा है. अच्छा ट्रांजिशन इतना अच्छा हो गया. Me and him are very close. ट्रांजिशन इतना अच्छा हो गया, फील्ड पे भी किसी को फील ही नहीं हुआ कि ट्रांजिशन हुआ है. सब कुछ मस्त चल रहा है, हम लोग आपस में हंसी मजाक करते हैं अभी भी, जैसे पहले रिलेशन था वैसे ही. So I feel really lucky that he's still around in my initial years of captaincy, and I'm still learning a lot from him. That's nice. Matthew You can have said like a to me that mentor. MS goes around finding things funny in everyday life that a 7-year-old would find funny. Yeah. He says he's like a child. Yeah. His enthusiasm is like a child. Yeah. He's very intrigued by things very quickly. Yeah. And he's always looking for something that interests him. Yeah. I think that's a great way Matthew to is not go far about away from his life. judgment. मैं अभी recently मैं उनसे मजाक कर रहा था. कोलकाता में वनडे मैच था ऑस्ट्रेलिया से. तो मुझे ना एक चीज़ याद आई. मैं जब अंडर 17 में कैप्टन बना, कोई क्लब का मैच था शायद अपने. तो एक मूवी हैज़ टू बोल. So in general cricketing terms, I ask him कहाँ से, मतलब which end. Yeah. तो you don't even say कहाँ से डालेगा, क्या करेगा. So this new guy came into our academy, and he was from Najafgarh. I had no idea. अच्छा खेलता था, उसको खिला लिया, तो बॉलिंग आ गई. तो मैंने उसको बॉल पकड़ाई, मैं कैप्टन था. मैंने कहा कहाँ से, कह रहा भैया नजफगढ़. मैंने बोला इधर आ. बॉलिंग कहाँ से डालेगा. Whoopsie. भैया नजफगढ़. वो इतना बोला था, Aww. उसको समझ ही नहीं आई कि मैं एंड बोल रहा हूँ. Bless. So I He's told him just the like story. too fresh. Match के बीच में couldn't stop laughing. You feel like he's very serious and all, but in his moments he laughs a lot. Oh, wow. That was like a very sweet little conversation. It felt like we were a fly on the wall getting to watch them have some food and chit chat about the goings on of being Virat Kohli. The thing that was interesting though is that you didn't actually hear a lot about Virat himself. He's better about talking about other people and his experiences than he is about recounting his own personal attitudes about himself, I guess. Yeah. Other than food. When it comes to food, he's very verbose and very detailed. But when it comes to talking about his preferences and tastes and whatnot, the way he sees life, he doesn't talk about it too much now. Yeah, he just seems to, I mean, but maybe that's what it's like in these interviews, because obviously this is our first one, right? Like, we don't know if Gaurav is just kind of like
talking to the guests, but getting them to talk about their teammates or people that they've played with and their experience in cricket and all of that. Yeah. And so then he gets kind of like their experience of what it's like being in that rather than like just talking about them. Because maybe in most other interviews, people are just asking him very direct questions about like, oh, what do you do? What's your life? How do you feel about this? Blah, 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 blah. Whereas this is like, What kind of editing software do you use? exactly. And whereas this is like, it's very chill and it's like, yeah, you know, talk about your friends and your experiences and what it's like doing that stuff. So yeah, it is interesting. It felt very candid. Yes. So that was nice. Yeah, you know? I wonder if like It didn't feel like prepared answers or like, I'm trying to pitch him something right now. You see interviews where it just feels like they're just really trying to be very strict about talking about this thing they're selling. He's not selling anything. He's just hanging out. It's just shooting the shit. Yeah. It's chatting. Yeah, I like that. It's a good time. You guys, thanks so much for hanging out. I'm Jabby Koi. This is Achara Kirk. Peace out.